Hello students, our today's topic is specified transfer of APC values. What do you mean by APC? So this defines transfer rules for the posting of acquisition and production cost values for depreciation area. This specifies the reference depreciation area that provides values to another depreciation area. These transfer values let you ensure that certain depreciation areas have identical asset values. For specified transferring APC values, we can go by transaction code OBAC or by path SPRO, SAP Reference Implementation Guide, Financial Accounting, Assets Accounting, General Valuation, Depreciation Areas and Specified Transfer of APC value. SAP में जाके डिफाइन करते हैं. Okay, SPRO, SAP Reference Implementation Guide, Financial Accounting, Assets Accounting, General Valuation, and then depreciation areas, specified transfer of APC values. Execute it. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो वैल्यू एडिशन डिफाइन किया है. वैल्यू एडिशन जो अगर हम फॉर बुक डेप्रिसिएशन के लिए देखें तो क्या सेट है 00. व्हाट डू मीन बाय 00? We will see here. Okay. 00 मीन्स यहाँ पर जो एरिया डिफाइन हुआ है वो किसी पर डिपेंड नहीं है. फॉर 15 मतलब टैक्स बैलेंस शीट वैल्यू कहाँ से लेगा? 01 से. कॉस्ट अकाउंटिंग 01 से. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अगेन 01 से. एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन ग्रुप करेंसी वैल्यू कहाँ से लेगा? 30 से. एंड 32 ऑल्सो फ्रॉम बुक डेप्रिसिएशन. एंड फॉर 41 एंड 51 देर इज नो वैल्यू. अगर हम यहाँ पर न्यू सेशन ओपन करते हैं SPRO, SAP Reference Implementation Guide, then Financial Accounting, Assets Accounting, migration में जाने की जरूरत नहीं है. हमें जाना है जनरल वैल्यूएशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर and copy reference and click on copy delete, enter your depreciation and then click on continue. तो देखो यहाँ पर ये जो 30 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन लोकल करेंसी है ये हम रियल टाइम में पोस्ट करने वाले हैं. बुक डेप्रिसिएशन ऑल्सो इन रियल टाइम एंड टैक्स बैलेंस शीट एरिया डज नॉट पोस्ट एंड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग एरिया पोस्ट डेप्रिसिएशन ओनली. तो फॉर रियल टाइम हमें क्या डिफाइन करना है यहाँ पर? ये जो 30 है हमें उसे ब्लैंक रखना है. तो जस्ट डिलीट इट एंड प्रेस एंटर. देन 31 अभी 30 से वैल्यू ले लेगा. So now 31 also carry a value from 30 and we will remove the identical mark from 41 because 31 and 32 both are taking values in USD dollar. Now we will save it. Just press save. Okay.
and come back. Then click on yes button. और ऑप्शन 20 जस्ट चेक कर लेते हैं. A depreciation area can only adopt values from different depreciation area to which the same accounting principle is assigned. 20 adopts from depreciation, however different assigned to the depreciation areas. Okay, just check it. Again we will click on save button. Okay, we will go to another session. SPRO, SAP Reference Implementation Guide, Financial Accounting, Assets Accounting, Organizational Structure, Copy Reference and Copy Delete. Now click on Continue and just change the gap, and here change the gap. Double click GAGB. Double click on this. Okay, this is okay. Gap, and here change here area post on depreciation only. Same. Area post 0 does not, then here real post depreciation. Okay, we will change here real post depreciation. Press enter. Area third, just double click on it and change to area depreciation post only. Then 30 area post in real time. Here also area does not post, just press enter. And here also area does not post to come back. And now click on save button. Then come back to our specify APC values and now press enter and just save it. Okay, now click on create request. Enter the description. Specify transfer APC values. Click on save button and then click on continue button.